Und die Zeichen im Westen. Herausforderungen durch das Bittgebet. Teil 2. और मगरिब में निशानियाँ, दुआ के ज़रिए चैलेंज। पार्ट 2। Amerikanische Zeitungen berichten über die Ausrufung des verheißenen Messias a.s. Die US-Presse veröffentlichte die Erklärung vom verheißenen Messias a.s. in großem Umfang. Und einige von ihnen veröffentlichten diese Herausforderung buchstäblich. Eine Zeitung veröffentlichte diese Herausforderung unter dem Titel eines Duells im Gebet, Englisch gegen Arabisch, und schloss ihre Aussage mit dieser Beobachtung zusammengefasst ab. Mirza schrieb an Doi: Du bist der Anführer einer Gruppe, und auch ich habe viele Anhänger. Wir können leicht zu der Antwort gelangen, wer von uns beiden vor Allah im Recht ist. Dies ist wirklich ein vernünftiger und fairer Test. Doi jedoch antwortete darauf nicht. Am 14. Februar 1903 erklärte Doi: Ich bete zum Herrn, dass der Islam von der Welt abgeschnitten wird. O Herr, zerstöre den Islam. अमरीकी अखबारात ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऐलान को शाया किया। अमरीकी अखबारात ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऐलान को वसीअ तौर पर हर्फ बहर्फ शाया किया। इस तहद्दी की एक अखबार ने यूं सुर्खी लगाई, एक अंग्रेज़ी और अरबी में दुआ का मुकाबला, और अपने बयान को यूं मुख्तसरन ख़त्म करते हुए जिक्र करता है। मिर्ज़ा साहब ने डोई को ये लिखा कि आप भी एक जमात के सरबराह हो और मैं भी। इस तरह हम बड़ी आसानी से एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कौन हक़ पर है। ये हकीकतन सबसे माकूल और मुनसिफाना फ़ैसला है। लेकिन डोई ने इस तहद्दी का जवाब नहीं दिया। डोई ने 14 फरवरी 1903 में ये ऐलान किया, मैं अपने रब से ये दुआ करता हूँ कि इस्लाम की जड़ इसी वक्त दुनिया से कट जाए। ऐ मेरे रब, इस्लाम को तबाह और बर्बाद कर दे। नाऊज़ु बिल्लाह। Zweite Ausrufung des verheißenen Messias a.s. Am 23.08.1903 veröffentlichte der verheißene Messias a.s. eine zweite Ausrufung, adressiert an Doi, indem er sagte: Wenn er meine Herausforderung annimmt und sich gegen mich stellt, wird er schon vor meiner Zeit mit großen Depressionen, Qualen und Schwierigkeiten sein Ende auf dieser Welt finden. Daraufhin antwortete Doi wiederum nicht. Der verheißene Messias a.s. gab ihm ein weiteres Mal 7 Monate Zeit, um eine angemessene Antwort zu geben. Wenn er sich von der Herausforderung drückt, so werden die Menschen in Amerika und Europa gegen ihn aussagen. Das Drücken vor der Herausforderung wäre seinem Tod ähnlich. Abschließend seiner Ausrufung sagte er, dass eine Katastrophe die Stadt Zion bald belagern wird. मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दूसरा चैलेंज। 23 अगस्त 1903 को हुजूर ने अपना दूसरा चैलेंज मिस्टर डोई को इरसाल किया और फरमाया, अगर मिस्टर डोई ने मेरी इस तहद्दी को अपने अमली कौल व फ़िअल से किसी तरह कबूल कर लिया तो मेरी ज़िंदगी में ही इस दुनिया को दुखों, तकलीफ़ों और आफतों में मुब्तला होकर छोड़ देगा।
लेकिन डोई ने कोई जवाब नहीं दिया। हुजूर ने डोई को 7 माह की मोहलत दी। आपने फरमाया, अगर डोई मुकाबला के मैदान से भाग गया तो अमेरिका और यूरोप के लोग उसकी शहादत देंगे। डोई का मैदान से भागना उसकी मौत के मुतरादिफ होगा। आपने इस ऐलान को इस फरमा पर ख़त्म किया, मदीनतुस सह्यून पर जल्द आफत आने वाली है।